Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. I hope you are all doing well. Today we are going to do the diary of 14th April 2021. So let's start from English Comprehension Diary. Unit number 7, Part F, G, complete. Okay students, open your books. So let's start the exercise. Option number F. Use the following words in your sentences. Let's make sentences. The first one is suffer. She has been suffering from asthma for 2 years. The next one is prayer. Peasant's prayer was answered. The next one is exclaim. He exclaimed with joy that he got prize. The next one is stupid. This is a stupid mistake. The next one is coins. Peasant found silver coins in the pot. The next one is field. The peasant worked hard in his field. The next one is matter. He will look into the matter. He will look into the matter. The next one is angry. Don't angry with anyone. Horrible. You have made a horrible mistake. And the last one is quickly. Walk quickly to get there in time. The next option is G. Change the following sentences as given in the example. Let's have a look at some example. We can use unless instead of if not. Basically unless is a conjunction. We use unless to make an exception to something we say. Okay, now let's move to some examples. The young geese cannot migrate if they do not have a leader. Now let's convert this sentence into unless. The young geese cannot migrate unless they have a leader. Now let's move another example. You will be late if you don't take a taxi. Now let's convert it. You will be late unless you take a taxi. Okay, now let's convert these sentences into unless. The iron would not work if you do not turn on the electricity. The iron would not work unless you turn on the electricity. You cannot travel on a train if you do not get a ticket. You cannot travel on a train unless you get a ticket. The milk will go bad if you do not keep it in a refrigerator. The milk will go bad unless you keep it in refrigerator. Your game would not improve if you do not take practice. Your game would not improve unless you get practice. You cannot be fishing if the storm does not stop. You cannot go fishing if the storm does not stop. You cannot fishing unless the storm stops. Salim would not be better if he does not take medicines. Salim would not be better unless he takes medicine. And the last one is they will not treat you good if you do not treat them well. They will not treat you good unless you treat them well. Now let's move to English language diary. Present, past, future, indefinite revision. Students, as you know, we have discussed each and everything about the present, past and future tense in our previous study.
So for these chances, you can watch the previous diary of 31st March, 8 April and 10 April. And for further detail, you can also concern from our YouTube channel Miller School and College official channel, unit number 5, lecture number 17. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today our science diary is revision of unit number 3. डियर स्टूडेंट्स, कल हमने फर्स्ट हाफ रिवीजन की थी यूनिट नंबर 3 की. आज हम सेकंड हाफ रिवीजन देखेंगे. ओपन दी पेज नंबर 39. कल हमने टेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1 एंड टेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट की थी. आज अब हम देखेंगे रिव्यू एक्सरसाइज को. पार्ट ए में एमसीक्यूज देखिए. सारा इज एग्जामिनिंग गार्ड सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप. व्हाट कलर शी विल ऑब्जर्व? ग्रीनिश. चूज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ लीफ टू कंडक्ट फोटोसिंथेसिस. पेज नंबर 40 पे देखें. थर्ड वन इज फ्रॉम वेयर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इनिशिएटेड. क्लोरोफिल्स. विच गैस वुड इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर इफ देयर वुड बी नो फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड. Which of the factor will enhance the speed of photosynthesis? Increasing the light intensity. Choose non-photosynthetic organism. Non-green plants. Water loss from leaves is called transpiration. Which is the main product of photosynthesis? Glucose. What concentration of the ethanol should be taken in a boiling tube for the confirmation of photosynthesis? 90%. Last one is in which process the oxidation of glucose occur? Respiration. Dear students, next देखें short questions. What is the function of cuticle? इसका आंसर पेज नंबर 30 पे देखें. How does carbon dioxide affect the rate of photosynthesis? इसका आंसर पेज नंबर 33 पे है. Fourth one is enlist the importance of photosynthesis. इसका आंसर पेज नंबर 32 पे देखिए. Fifth one is name the different raw and waste products in the processes of photosynthesis and respiration. Dear students, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोगों को पहले लगवा दिया गया है. आप लोगों ने इन पेजेस को देखते हुए पीछे से आंसर याद करने हैं दोबारा से. नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखिए. हाईलाइट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. इसका आंसर पेज नंबर 30 एंड 31 पे है. सेकेंड वन इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स. इसका आंसर पेज नंबर 32 पे. डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसका आंसर पेज नंबर 32 एंड 33 पे है. फोर्थ वन इज राइट ऑन अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द लीव्स दैट फैसिलिटेट्स फोटोसिंथेसिस. इसका आंसर पेज नंबर 34 एंड 35 पे देखें. Prove with the help of an experiment that photosynthesis takes place in a leaf. पेज नंबर 35 एंड 36 पे आंसर देखिए. Elaborate the importance and the process of respiration in the plants. इसका आंसर पेज नंबर 36 एंड 37 पे मौजूद है. सेवंथ वन इज compare and contrast the processes of photosynthesis and respiration in plants. इसका आंसर पेज नंबर 38 पे है. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को आज रिव्यू एक्सरसाइज करवाई गई है जिसमें एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एंड प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. आपने ये यूनिट नंबर 3 जो रिमेनिंग है अच्छे तरीके से लर्न करना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, as you know that our syllabus has been finished. Now we'll start our revision. Let's start. Today maths revision diary is एक्सरसाइज 3A to 3D. डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी डायरीज पे करेक्शन कर लीजिए. आज आप रिवीजन करेंगे एक्सरसाइज 3A और 3B की. डियर स्टूडेंट्स, आपने इन दोनों एक्सरसाइजेस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. अल्लाह हाफिज़.